Well, it's a pleasure to host you. हम अपनी जो बातचीत का आगाज आपकी इनिशियल जर्नी से करते हैं। जरा सा बताइए कि अपना आपकी जर्नी जो है इन द चाइल्डहुड एंड स्कूलिंग एंड ऑल दैट स्टफ एंड देन थ्रू इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। ये तो आप बिल्कुल वो थेरेपिस्ट वाला स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी चाइल्डहुड हाँ, से स्टार्ट। so maybe lie down on the couch and then we'll start. Yeah. Yeah. So, but I think that's a good question because we are all really a product of our initial years. In my case, I'll tell you a little bit about it. How my initial bringing up influenced the rest of my life. तो मेरे फादर जो थे belongs to तहसील खारियां in गुजरात डिस्ट्रिक्ट। तो उस इलाके के लोग जो हैं या वो इंग्लैंड बैठे हुए हैं या स्पेन बैठे हुए हैं या फिर फौज में। तो माय फादर इन द आर्मी एंड लॉट ऑफ आवर फैमिली वाज इन द आर्मी। तो मैं भी जब ग्रो अप कर रहा था तो मेरा भी ये ख्याल था कि मैं तो फौज में जाऊंगा और मतलब कि आप सुबह शाम इर्द गिर्द वर्दी देखते हैं तो एज अ किड दैट इज व्हाट यू फैंटेसाइज। तो वी मूव्ड अ लॉट, तकरीबन पूरा पाकिस्तान में हर जगह पे खाना बदोश की तरह I've had experience. So that was a very good experience in that way कि हर province में रहे हम लोग। And then my father also went to England for a master's degree. And in fact, जो मेरा, as we'll talk, you'll find out कि I have a bit of a adrenaline junkie, adventure के बारे में। तो वो वहीं से आया। तो he decided कि जी वो हम लोगों को, I was an only child, so my mother, myself and my father, we decided to drive. He decided कि हम अपनी Volkswagen Beetle में ड्राइव करके इंग्लैंड जाएंगे। So we drove to England through, उस जमाने में अफगानिस्तान के थ्रू, mid-70s में it was possible, Iran and Turkey and Greece and Yugoslavia and all that. तो फिर एक साल उधर I studied there in a school and उधर अपनी master's degree की war studies में। He was a lieutenant colonel at that time. तो फिर वापस उसी गाड़ी में Volkswagen में, उसका नंबर भी याद था LED 3687, वो चला के तो वापस आ गए। So I think that early experience, 8-9 साल का किड अगर वो उसको इस तरह का एक्सपोजर मिले तो मुझे वो जो कहते हैं ना वैंडरलस्ट कि जी करने का बड़ा शौक पैदा हो गया, which I've been doing. And तो उसके बाद इंग्लैंड में एक मैंने बच्चों का सीरीज होती है कॉल्ड बिगल्सवर्थ। तो बिगल्सवर्थ एक फिक्शनल RAF का पायलट था। तो उसकी कोई सीरीज है जिस तरह वो हमारी पाकिस्तान में वो भी तो है ना, इमरान वाली भी एक सीरीज है इस तरह की। तो वो उस पायलट का मैं पढ़ के मुझे फिर फ्लाइंग का बहुत जुनून सा हो गया कि जी मैं भी बिगल्सवर्थ को फॉलो करूं। तो मेरे पास तकरीबन उसके 70-80 वो छोटी छोटी बुक्स थी। तो फिर मेरा था कि अच्छा फौज में भी जाना है, तो फिर मैंने एयरफोर्स की तरफ मेरा रुझान हो गया। तो मैंने एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर दिया। तो आई वाज एन ओनली चाइल्ड, तो माय मदर एंड फादर वो थोड़े से they didn't want me to join the Air Force. तो उन्होंने फिर मुझे ब्राइब किया। और जब मैं ओ लेवल्स किए मैंने बीच में, क्योंकि हम ट्रैवल इतना कर रहे थे, मेरे फादर ने मुझे एचसन कॉलेज भर्ती कर दिया। तो आई यूज्ड टू बी देयर एंड वो लोग फिर wherever they were posted। तो मैंने एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर दिया। तो उन्होंने फिर मुझे ब्राइब किया। उन्होंने कहा कि यार मैं आई विल पे फॉर योर प्राइवेट लाइसेंस, तुम एयरफोर्स ना जाओ। तो एनीवे तो उस तरह मुझे जरा थोड़ा सा उन्होंने, he never said no, but he was, he knew how to deflect me, maneuver। तो फिर मैंने फ्लाइंग का मेरा ख्याल था फिर मैं PIA में जाऊंगा। उस जमाने में आपको याद होगा PIA was
a very high flying airline. Okay, Singapore Airline, Emirates, Malaysian, Gulf, even Malta Airline, ये सारी PIA ने इनको सेटअप करने में, और फर्स्ट एवरेज की फ्लाइट इफ यू नो वो PIA के जहाज ही थे. तो anyway, वो मेरा बड़ा प्राइवेट लाइफ में मैंने कर लिया. उसके बाद मैंने ओ लेवल्स के बाद फिर मैंने बाहर नहीं जाना था. आमतौर पे एचएसएन से लोग वो ए लेवल में चले जाते हैं, फिर वो बाहर निकल जाते हैं. तो मैंने इंटर किया और मेरा ख्याल था कि मैं अब PIA में चला जाऊंगा. तो PIA ने पायलट उस जमाने में लेने बंद कर दिए थे. दे हैड हायर्ड सो मेनी, तो दे वाज अ ग्लट. तो फिर मेरा दाखिला भी हो गया यूनिवर्सिटी में. तो ही सेड कि नहीं, तुम इंजीनियरिंग खत्म करोगे तो उसके बाद जो मर्जी कर लेना. तो ये वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे जो है ना वो वो नहीं कर रहे थे, बट रिफ्लेक्टिंग मी, nudging you to what you want. राइट डायरेक्शन. तो वैसे भी मेरा कोई इंजीनियरिंग में थोड़ा सा रुझान था, वो मैकेनोसेट्स और वो गाड़ियां, और आई वाज इनटू दैट मैकेनिकल थिंग. So anyway, वो 1.5 साल थे हमारे. 80 में FSC की, तो उसके बाद वो 1.5 साल में मैंने I got my commercial license. तो मेरा कमर्शियल भी हो गया. फिर मैं फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी बन गया लाहौर फ्लाइंग क्लब में पार्ट टाइम. तो जब मैं यूनिवर्सिटी गया तो मैं ऑलरेडी फ्लाइट इंस्ट्रक्टर था फ्लाइंग क्लब में एट अ वेरी यंग एज. एंड मेरा तो था कि यार मैं यूनिवर्सिटी शायद 1-2 साल रहूंगा, इतने में PIA जो है वो मुझे ओपन हार्टेड एक्सेप्ट कर लेगी. एंड आई वाज अ वेरी सीरियस इन फॉर फ्लाइंग. मेरे पास आई हैड एन एक्सटेंसिव लाइब्रेरी, बुक्स इंग्लैंड से मंगवा रहा हूँ, कहाँ से मंगवा रहा हूँ. एंड आई थिंक आई वुड से आई वाज वेरी कॉम्पिटेंट. आई मीन मैं हम्बल ब्रैग, लेकिन बट इट्स ओके. तो So I think मेरी जो initial engineering university का time था, I was a little distracted by flying. फिर मसूद साहब से मुलाकात हो गई, अपने जिनको हम प्यार से सुधा रैंच कहते थे. तो yes, वो जो उन्होंने हमें he was a wonderful teacher. उन्होंने कंट्रोल सिस्टम्स और एनालॉग कंप्यूटर्स और सारा पढ़ाया था, और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया था. He became a fast friend. उनका मैंने जो था उनका 750 था उनके पास पहले, नीला रंग का एक होंडा. तो वो मैंने उनसे खरीद लिया, और उन्होंने कावासाकी 1100 ले लिया मसूद साहब ने. अच्छा. तो हम लोग फिर बाइकिंग करके इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के ज़माने में एवरी सेमेस्टर हम लोग नॉर्दर्न एरियाज और दाएं बाएं, और सो दैट वाज अ वंडरफुल टाइम. बट उसका थोड़ा सा नतीजा ये हुआ कि बिटवीन फ्लाइंग एंड फ्लाइंग ऑन द मोटरसाइकिल मेरा जरा क्या कहते हैं टेंशन जो थी वो एक्स्ट्रा करिकुलर ज्यादा हो गई. और प्लस आई वाज थिंकिंग कि आई वुड जॉइन द PIA एनी टाइम, और मैं बाय करके तो फ्लाई अवे कर जाऊंगा. आई रिमेम्बर कि उस जमाने में जब मैं PIA का जहाज नजर आता था, तो मैं मतलब कि गाड़ी रोक कर उसको आई यूज्ड टू लुक एट इट जब तक वो गैप गिरा. तो इट वाज लाइक चाइल्डहुड ड्रीम, एंड आई वाज वेरी पैशनेट. तो एक मैं इंसिडेंट आपको बताऊं. जब मैं इंस्ट्रक्टर था पार्ट टाइम, तो एक उधर और बंदा था, उसका मैं नाम नहीं लूंगा बिकॉज ही इज अ फ्रेंड. But and he was also a good, competent pilot, and I had a lot of respect for him, or have a lot of respect for him. लेकिन PIA में उस वक्त जो है ना, they were not hiring. हम वेट कर रहे थे कि यार कब ऐड आएगा, कब इंटरव्यूज होंगे, कब हम लोग जाएंगे और सेलेक्ट होंगे. तो एक दिन मैं गया फ्लाइंग क्लब, तो लाहौर वाटन. तो पता चला कि जी वो उनका लास्ट नेम भी खान था. भाई खान साहब तो PIA ज्वाइन कर लिया उन्होंने. मैंने कहा ये कैसे हो सकता है?
तो उनके फादर का बड़ा असर रसूख था और somehow he got an appointment letter with no competition, no interviews, no nothing. अगर होया इंटरव्यू तो प्राइवेटली हो गया. I think that was a really defining moment in my life. एक आप कहते हैं ना pivot. तो I was outraged कि यार ये हमारा सिस्टम क्या है? I mean, there is no, like I said, I felt I was deserving, I was competent, I had worked hard, and there were many others as well. And then you pick up one guy and just, General Zia की तरफ से उनकी सिफारिश थी or whatever. Anyway, तो उसके बाद you can say कि मेरा थोड़ा सा जो है ना वो दिल उखड़ गया from PIA. मैंने कहा यार अगर ये ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की है और मैं I'm going to be stuck there, तो I can't. तो then उसके बाद फिर मैंने कहा कि oh my God यार अभी तो मैं तो पीछे रह गया हूँ, मेरी सपियाँ भी रखी हुई मैंने तो I'm carrying them around. I better shape up. So then I think I shaped up and I started spending a lot of time और थोड़ी सी इज्जत रख ली मैंने, वरना तो बड़ी मेरे हालात बड़े खराब थे. तो लेकिन आई थिंक उससे ये हुआ कि जो वो which I feel is important for young people to have extracurriculars as well. I mean, अपना focus करें on your main, but have get some experiences in life. And because the EQ I think at the end of the day, IQ of course अगर आप यूनिवर्सिटी चले गए हैं तो एक certain level of IQ तो होगा, लेकिन EQ is kind of uneven, I think, there, and some people just focus on one dimension, I think, unless you're going to be so hardcore in engineering. But if you see the trajectories of many people, there's a lot more to life than just the technology. There is you need to be able to manage relationships, have leadership skills, तो ये सब कुछ जो है ये डेवलप करना मेरे ख्याल से जरूरी है. और and the opportunities that I got at the engineering university, उसकी वजह से मसूद साहब से बड़ा लर्न किया हमने. बाकी I also felt कि our faculty was so dedicated, not extremely well paid, but I think they took pains. I mean, after that I came to the US, the young faculty did not, like, they expected the students to just step up and do their work. जबकि हमारी यूनिवर्सिटी वाले जो थे, they took pains. I mean, maybe not everyone, but there were quite a few who really helped. एक और aspect that's true for me was I came from Edison College. तो मैं तो अपना यूनिवर्सिटी में टाइम बहुत चेरिश करता हूँ, because I would not have really known Pakistan well अगर मैं वो 4 साल या 6 साल एक्चुअली जितने भी लग जाते हैं हमारे, वो मैं यूनिवर्सिटी में ना गुजारता. बिकॉज पीपल सारी बैकग्राउंड्स, मेरी बड़ी एक लिमिटेड बैकग्राउंड थी, but I got this exposure of people from all provinces, all kinds of backgrounds. उनके साथ interact करना, बैठना, कैंटीन पे बैठ के गपशप मारना, all that. That experience, I think, also is something that I cherish, and helped me really understand that Pakistan, what kind of a country we actually are. Otherwise, I think I was living in a bubble before that. तो ये तो वेरी गुड. सो काफ़ी इंटरेस्टिंग है एलिमेंट्स आपकी जो इनिशियल एजुकेशन एंड योर माइंडसेट. तो जहाज इम्पोर्टेंट थे, बिगल्सवर्थ, एंड और दूसरा ये कि आई थिंक इट फॉर्म्स योर कैरेक्टर. अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल, बिकॉज गवर्नमेंट सर्वेंट्स डिफरेंट जगह पे पोस्टेड होते हैं, यू बेसिकली get that exposure that
drives value, I think, as far as we are all concerned. और तीसरा ये कि getting the right direction, both from your parents as well as from the right teachers. I think that those are very, very important elemental things. वो इंसान को एहसास होना चाहिए कि किससे क्या, किस बात को सुनना है, but as long as that is available to you. कुछ लोगों को तो बेचारों को available नहीं होता. So I think this is an important thing that you mentioned. इसमें सिर्फ मैं ये ऐड करूंगा कि for us, and I really hold this very dearly is कि the opportunity that पाकिस्तान में जो हमें I don't know कितने a few hundred rupees के पर हम कर रहे थे ये एजुकेशन, वो कितने लोगों ने अपना पेट काट कर हम लोगों को अपॉर्चुनिटी दी कि हम वो अपॉर्चुनिटी हासिल करें, So, अभी तो खैर there are so many institutes, लेकिन उस जमाने में university used to be the only way to do engineering. So I think that sacrifice that the country was making to educate some people at the expense of so many not getting much. So I think we should always remember that. And I think at Aleph, this is what we are, trying to do is, what can we do now? Especially those of us who are, outside Pakistan. जी बिल्कुल, वेरी गुड. सो आपने अब इंजीनियरिंग डिग्री आपने जो अपने 5 साल लगा के जब खत्म की, सो पहली बात तो ये, बिफोर वी गेट टू दैट, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, सो यू आर आउट बाउंड, राइट? और जगहों पे जाना है, मोटर बाइक्स पे लॉन्ग ट्रिप्स करनी है, बट विद इन द यूनिवर्सिटी, बिसाइड्स द टीचिंग पीस, बाकी लोगों के साथ, you had friends, you had things that you were doing within the university as well? जी बिल्कुल. I mean those friendships, so जिस तरह आजकल तो WhatsApp पे सारा काम होता है, तो मेरे जो दो मेन ग्रुप्स हैं, एक मेरे हाई स्कूल के और एक इंजीनियरिंग के. तो I mean I'll be honest, I think the amount of interaction I have with my UET friends is maybe twice what I have with my high school friends. So that kind of indicates कि जो उस जमाने में जो friendships बनी, वो अभी भी they're carrying, and I think that period जो था जिसमें there was relative freedom, I could choose, because school में तो एक तरह आप straight jacket होते हैं, but in university में you're free to do so many different things, choose friends, move around, and I think in my view that was the period that kind of formed my character, and as well जो ये मैंने आपको बताया ना एक्सपीरियंस मुझे एक हुआ, एक पर्सनल, which I took very deeply, कि यार ये unfairness in our system. उससे मैं उस वक्त I was livid, I was very angry. Angry young man नहीं होता, वो वाला हो गया. और I think but उसका नतीजा ये हुआ कि I refocused on engineering, and I said कि I'm not going to be मैं किसी के उस पे मुताज नहीं होऊंगा on some कि वो अपने award कर दे या ना करे. I will, and I felt that I needed something substantive. तो वो फिर मेरे लिए being able to get my degree and substantively learn something became important. So I think I'm glad कि वो हुआ मेरे साथ. जी ये these are, as you said, pivot points होते हैं. They drive and inform much of your life, and it is, ये सब हमको और हमारे young लोगों को यही सोचना चाहिए कि sometimes there are disappointments, but those become catalysts for change and for growth and for doing something greater than what you were trying to get. वो कैरेक्टर तभी बनता है ना कि जब आपको थोड़ा प्रेशर आता है. बिल्कुल. So आपने अब अपनी डिग्री खत्म कर ली. Now you are a UET graduate. So what are the next steps? अच्छा, तो एक तो ये था कि I felt, I'll be very honest, I felt that I had not taken full advantage of UET, the opportunities, because मैं distracted था.
तो so I said कि यार I need to go back to college and do another degree which I will do with a vengeance. यानी कि वो मैं बिल्कुल ठीक तरीके से I will. So I kind of gave myself a new start. मैंने कहा यार I'm going to move to computer science. ठीक है जी. अच्छा. और इसको वो कहते हैं ना खोचा फिर शुरू करेगा. ठीक. तो but all whatever I did later on in my life, the career and all that, is based on what I was able to do at UET and what the base that UET gave me. It's all based on that, not on my other, ventures and all that. It enabled me to get admission for a master's degree in computer science. उसमें उन्होंने मुझे कुछ 1-1.5 सेमेस्टर के prerequisite ठोक दिए because data structure तो बहुत सारी चीजें मैंने नहीं की थी. ऐसे कोई बात नहीं यार, ये खोचा फिर शुरू करेगा. तो मैंने I really enjoyed. मैंने दोबारा बड़े शौक से computer science किया at George Washington University. Now George Washington University is not one of the top ones in computer science. लेकिन जो मेरे करतूत थे जे यूनिवर्सिटी के उसके बाद मुझे वहीं दाखिला मिलना था. ठीक है जी. So, but I think I took good advantage of that opportunity. Or eventually I passed with वहाँ यूनिवर्सिटी में सिस्टम था एक वो final क्या कहते थे उसको. There was like an 8-hour exam at the end, and उसमें you needed a superior to get to PhD. और मेरा PhD करने का प्लान था. तो मेरा superior आ गया. I was very happy कि यार चलो कुछ काम तो ठीक किया ना. Because I felt guilty कि मैंने फ्लाइंग और मोटरसाइकिल पे ज़्यादा टाइम लगाया था. तो इस बार मैंने उसका वो कफारा अदा किया और I focused. So and then also I also realized कि वो आटे दाल के भाव भी पता चल गया था कि अब समझ आई थी कि I have to go do something, So because my PIA dreams had been dashed. Yes. So I mean, PIA pilot was a great career at that time. I don't know about now, but it was a great career. Oh, one more thing. जब PIA ने हायरिंग की तो उसमें मेरे अब कई स्टूडेंट्स थे जो गए जो मेरा एज फ्लाइट इंस्ट्रक्टर मेरे स्टूडेंट रह चुके थे. I was flabbergasted कि यार फलाना बंदा वो भी PIA में फ्लाई करेगा, फलाना बंदा वो भी फ्लाई करेगा. I mean, I could not fly with them. अच्छा. So जब when you see कि PIA के साथ क्या हुआ तो I'm sad to say कि I sometimes think यार बड़े बच गया मैं, I didn't go there. But जब एक आपकी हायरिंग पॉलिसी इस तरह की हो कि आप इस तरह का मटेरियल हायर करें तो वो फिर हुआ कि एक एशिया की टॉप एयरलाइन जो थी वो उसके 15-20 साल के बाद उसके हालात. And that's not just for PIA, it's to It's for any institution. Yes. So I think वो जो एक integrity अगर ना रहे तो it's very sad, and I don't say this with any sense of satisfaction, but of great sadness, because I was like awestruck by what PIA was. And there are people who made that. हम जैसे लोग जिन्होंने इसको इतना जबरदस्त बनाया था early. Anyway, so back to here. वो करके तो my father had a heart attack, तो I came back to Pakistan for कोई आधे 1.5 semester के लिए, midway एक semester अगला off ले लिया, and then I got married here. He got me married, and so my wife is a doctor, तो वो खत्म कर दी थी. मैं वापस आ गया, मैंने आके इंटर्न किया, उसके बाद वो आ गई. तो फिर PhD वगैरह तो आउट हो गया because I had some responsibilities now. तो फिर early 90s रिसेशन था, जॉब वगैरह बड़ी मुश्किल थी, स्पेशली एक F1 पे वाले पे वो. और यहाँ DC where I was, Washington DC, और हर कंपनी जो थी वो
गवर्नमेंट के लिए काम करती थी, सारे कह रहे थे नेशनल चाहिए. It became a bit of an issue finding a good job. And तो मैंने टेलीकॉम में दाखिला ले लिया कि यार status maintain रखने के लिए, and kept looking for a job. I finally found one, and I found a job in a product company which is called or was called NetSoft. It was Laguna Beach based, California की. And they had a federal services division which sold to the federal government. So they hired me. उनका था अपना PC to mainframe connectivity ka they put a card in the PC, and then there was some software, and 3270 आपको अगर याद हो terminals हुआ करते थे mainframes के. So they did उस जमाने में क्योंकि PCs आ रहे थे, so they did 3270 emulation software ताकि आप print भी कर सकें locally, and all of that. So I got into that. That company also did services. So meaning because they were an infrastructure networking type company, or उस जमाने में, if you remember, वो LANs or WANs were like, it was a, आजकल तो कोई सोचता नहीं है because it's just everywhere, but उस जमाने में email was just coming in. I remember CC mail हुआ करती थी एक, and then वो मेल सिस्टम जो था वो सिर्फ कंपनी के अंदर चलता था, उसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं थी, उसके लिए गेटवे लगानी पड़ती थी कि आप वो मैसेजेस को, प्रोप्राइटरी मैसेजेस को SMTP फॉर्मेट में डाले, और ऑल दैट. तो सो उनका प्रोडक्ट का भी हम कर रहे थे, और आई वाज एन इंजीनियर, एंड ये सर्विसेज भी कर रहे थे. बट द कंपनी हैड अ डिबेट गोइंग इंटरनली. उसके ओनर्स थे, the owners were South Africans. एक South African Chinese था, और दूसरे Jewish South Africans थे. जो हमारा लोकल बॉस था उसका नाम था Ivan Soccer. हम उसको कहते थे Ivan the Terrible. तो बिकॉज वो हर 3 महीने के बाद हम सारों को बुलाकर एक कॉन्फ्रेंस रूम में बहुत डांटता था, पता नहीं क्यों. वो वाली बात है ना, वो क्या कहते हैं, the beatings will continue until the morale improves. Exactly that. I think वो थोड़ा सा he was I think उसका EQ कम था. तो एक दफा मुझे याद है हम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस गए, तो उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था. तो वहां उसने क्लाइंट के साथ ही लॉस्ट इट. So Department of Justice है, तो FBI and all that are under them. उन्होंने सिक्योरिटी बुला के हमें बात भी. तो मैं तो इमिग्रेंट था, मेरा H1B पे था, अभी वो ग्रीन कार्ड भी चल रहा था. मेरी फट गई, मैंने कहा यार ये मुझे मरवाएगा. एनीवे उस जमाने में बड़ा जल्दी हो जाता था. आई थिंक मेरा 12-13 महीने में आई थिंक आई गॉट माई ग्रीन कार्ड. तो अच्छा, कंपनी के अंदर बहस ये हो रही थी कि यार शुड वी डू प्रोडक्ट्स, और हमारा प्रोडक्ट है, वी शुड हैव अ सिंगुलर फोकस ऑन आवर प्रोडक्ट. और ये दाएं बाएं ये सर्विस वगैरह कर रहे हैं, इट्स नॉट स्ट्रेटजी, तो इसको बंद करें. तो मेरे साथ एक कोलीग था, अफ्रीकन अमेरिकन, डोइन ग्राम. he runs a pretty nice company right now. तो डोइन और मैंने सोचा कि यार अब मेरा ग्रीन कार्ड भी हो गया था, तो इट वाज बर्निंग अ होल इन माय पॉकेट. तो प्लस वो आइवन की डांट भी बड़ी खा ली थी हमने, तो आई वाज गेटिंग फेड अप. तो so we said कि अगर ये सर्विसेज गिव अप कर रहे हैं, we know the clients know us, we've done really well. So we talked to the company, we said कि आप लोग we're going to leave anyway. So do you have any issues with us approaching the clients जो सिर्फ services वाले? So they didn't have a problem. Ivan was good about that, and so they sent us off, and we approached some clients, and we started a company. And Dwayne and I, it was called Distributed Information Technologies.
D for Dwayne and I for Imran. So नाम ऐसे फिट कर लिए थे. So issue was that my son had been born, and who, by the way, today is a pilot. So and he also read Bigglesworth. तो सो ये वो तो कनेक्टेड होता है ना जिंदगी में, ये चीजें ये कनेक्ट हो जाती हैं. बिल्कुल बिल्कुल. तो and he blames Bigglesworth also for coming up. So anyway, मसला ये था कि मेरे पास सिर्फ तकरीबन 1 महीने का किराया हुआ करता था बैंक में. तो मैंने that was I think another pivot, आप कह लें, जिस तरह वो एक पहले pivot था. तो so I was like, यार, I've been in this country for maybe एक डिग्री की है, उसके बाद मैं 15 महीने के एक्सपीरियंस है मेरा, मैं किसी को जानता नहीं हूँ. There is no safety net. My wife is not working either. Or even though my father had retired as a major general, but ये पुराने ज़माने के जनरल थे, इनके पास कोई पैसे पूसे नहीं थे. आजकल I think story might be different, but he was the पुराना टाइप का. तो और वो डॉलर एक्सचेंज रेट, तो मैंने कहा ये तो बड़ा मसला हो जाएगा. So I took a very tough decision for me at that time, because मुझे उस वक्त स्प्रिंट से भी एक ऑफर आ गई थी. मेरा जो बॉस था वो भी छोड़ के चला गया था आईबीएम से तंग आके. तो he was in Sprint and he offered कि ये तुम आके मुझे ज्वाइन कर लो. तो it was better pay. But I think वही जो I mean, go back to the experiences in UET, जब हम लोग पहाड़ों में एडवेंचर कर रहे होते थे मसूद साहब के साथ. तो that sense of adventure, the थोड़ा सा पंगा लेने का भी, शौक, it was like I couldn't resist it. कि वो the idea कि यार we'll be on our own, कोई बॉस नहीं होगा, and then it's adventure. Actually I didn't think about it that much. कोई ऐसी बहुत लंबी चौड़ी strategic thought नहीं थी कि शेख चिल्ली की तरह कि अच्छा फिर मैं अंडे बेचूंगा और फिर ये होगा फिर वो होगा. So I just, my wife was supportive, and तो मैंने डोए को कहा यार तुम जाओ और 1 महीना तुम करो, तो एक जब उसका वो पेमेंट आ जाएगी 1.5 महीने के बाद, तो देन आई विल ज्वाइन, ताकि मेरा किराया हो जाए. तो वी डिड दैट. डोइन पहले गया, उसके बाद मैं गया, and then we started that company. So I think that's where I took that leap. मेरी फैमिली में कोई बिजनेस नहीं करता था. Everybody was like government servant, ज़्यादातर फौजी. So this was something out of the character for us. ये पिवट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये यंग लोगों को ये वाली चीज से सीखना चाहिए. सो बिकॉज आपने यही कहा कि भाई सेफ्टी नेट नहीं है, यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू हैव अ वाइफ एंड अ चाइल्ड, यू आर पे चेक टू पे चेक, ठीक है, एंड टू देन फॉर्मुलेट ए कंपनी गोइंग आउट ऑन योर ओन विदाउट वो जो पे चेक का नशा है वो हटा के, हाउ, एंड दैट्स नॉट एन इजी डिसीजन. You're in a different country. You're not even a citizen. You got a green card. So you are working through this new paradigm of a new thing that आपकी खानदान में कोई business नहीं करता. Now you're trying to formulate this, right? So this is on many levels, this is a transition. This is a significant pivot. And so it takes a lot of self-confidence and courage. So इसके बारे, this decision is a very, for you, it's perhaps the most important decision besides marrying your wife, right? So how did you do that? So I think इसमें आपने wife का जिक्र किया, तो I think she was a major part. I mean she was supportive. कोई उसने बिल्कुल she had no demands, nothing. हमने like typical Pakistanis, हमने जैसे ही मेरा जॉब हुई थी तो हमने एक करोला ले ली थी. तो बस वो मीनिंग के we were
living in an apartment, and she didn't have any कि यार मुझे ये चाहिए या वो चाहिए या and even a friend of mine was living with us in one of the spare bedrooms because we wanted to cut the cost and all that. So I think she sacrificed. I let me pursue my dream, and I again would say that there was a bit of a sense of adventure. जब आप एक नई venture शुरू कर रहे होते हैं, तो it's very exciting. आप कंपनी का नाम सोच रहे होते हैं, आप ये कर रहे होते हैं कि सब पहला क्लाइंट कहाँ से आएगा, ये कैसे होगा. जब पहला आपको कोई क्लाइंट आपको काम देता है, तो it is like कि आपने बस दुनिया जो है ना फतह कर दी. So I think that adventure kind of carried me through that excitement. I mean, अब मैं आपको जैसे बता रहा हूँ तो मुझे याद आ रहा है, तो I'm feeling so good about it. कि उस वक्त I also had the same feeling, but I wasn't feeling good. उस वक्त मैं डरा हुआ था. But obviously, that fear also kind of drives you. Yeah. मैं आपको ये बताऊं कि the price you pay. मेरा ये था कि इमिग्रेंट की अमेरिका में ये एक चीज है कि इमिग्रेंट्स जो फर्स्ट जनरेशन फ्रेश ऑफ द बोट जिसको कहते हैं, we work our asses off because there is no safety net. We have burnt our boats and we have to succeed. और उसके बाद फिर हम अपने बच्चों के पीछे भी पड़ जाते हैं इसी तरह, जिससे वो बड़े नाराज होते हैं कि and sometimes they can't do it because they have safety nets, they have other things, but the first generation carries that burden. So I am very cognizant of all the time that I took away from my family, and which I'm trying to make up for now. But my other advice is कि वो वाला time वापस नहीं आता. So, वो भी सोचे थोड़ा सा उसके बारे में भी कि when the kids are young, they need you. So you have to balance, which I did not. नहीं, वो तो अब you are living it, right? So you're not thinking through it because so many other pressures that are on you. So you are dealing with it on a tactical basis on a day to day. एक और चीज ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और I hope somebody listens. वो ये है कि I thought my only responsibility was delivering the financial security. I mean, that is what my focus was on. And I think by delivering that, I've done my job, which is totally untrue, and which now I feel after so many years. I was so singularly focused on making it a financial success. I think I lost track of some of the other dimensions of life. So which I'm trying to make up, catch up. जिस तरह मैंने यूनिवर्सिटी में भी catch up करना पड़ा था ना, अभी मैं catch up कर रहा हूँ. We all do in our lives. अच्छा, तो DIT बन गई है, अब आपको पहले contracts मिल गए. You basically are now a valid company. You're probably hiring, couple of people besides the two of you. People भी था. So early on, within a couple of years, Dwayne and I found out that we are good friends, लेकिन हम good business partners नहीं होंगे. So because Dwayne के अपने quirks थे, मेरे अपने थे. So we kind of separated, and I joined with the three other guys, and we started another company. It's called Data 4. And उसमें commercial work भी कर रहे थे, और मैं क्योंकि government का background था, तो मैं government side handle कर रहा था. So everything went very smoothly. We were doing very well. Company, I think we went up to like maybe 10 million or something, and we did a lot of H1 because non-governmental work था. We did and I'm so happy कि वो जो उस वक्त H1 पे लड़के आए थे, so they moved from renting an apartment to buying a townhouse to buying a single family house, और अब उनके बच्चों की शादियां हो रही हैं. So I get a lot of satisfaction thinking about how I was able to
impact a few families in Pakistan. Anyway, so therefore क्या ये हुआ कि फिर वो .com bust हो गया, तो डॉट बस्ट हुआ तो हमारे कंपनी का भी थोड़ा सा बस्ट हो गया. तो उसमें I think when things are going well, so everything is hunky dory. When the chips are down, so then you find out that people get a little antsy, or मसले वसाइल शुरू हो जाते हैं. थोड़े बहुत partnerships are very difficult. So we decided कि यार अच्छा चलो let's go our own ways. तो मेरा government experience था, तो I started NuAxis, जिसमें 6 employees came with me, जो बाकी उनके साथ चले गए, the other guys. And I decided at that time, at this time, I'm going to do it myself. I will be the, वो कहते हैं ना, मुझे कोई किसी से कुछ पूछना होगा, I'll do it my way. So ULEFUSA started in early 2000s, and so we've carried on. So mashallah, alhamdulillah, we've done well. Abhi we have about close to 400 employees. We're north of 50 million, and इसमें I think I would give my team, जिनको मैंने early on hire किया था, including so जब हमने वो 6 employees तो देसी थे सारे, तो मेरे साथ आए. लेकिन अब क्योंकि गवर्नमेंट में I wanted, और वो सारे टेक्निकल थे. So मैंने सोचा कि यार अब किस तरह, so Raza Latif GIK का है, so he became kind of my number 2 guy, and now he's the CEO and I'm the chairman, and he's a full partner now. So anyway, so we hired यहाँ local जो flagship university है वर्जीनिया की, University of Virginia. तो वहाँ से हमने कहा कि यार who can we hire who's smart, and it's kind of not very expensive. So we hired 2 English and anthropology type majors, both young girls who had just come out, और वो की recession था, उनको भी job नहीं मिल रही थी. They are so smart कि I like to say that if they were in NASA, they would be rocket scientists. So I think that was betting on those young people was great. They are still with us after what, 20 years, and that's their first job, and they're still with us, and they are vice presidents, and उनके C roles हैं इस वक्त, C-suite में हैं. और so अब कंपनी जो है वो जो गवर्नमेंट में होता है ना, स्मॉल बिजनेस डेजिग्नेशन, उसमें तो आपको सेट असाइड्स मिल जाते हैं. But now we are what is technically, we're not a large company. I would say we're an emerging company, and technically we are not small. We are large. There's no middle category. So now we are like head to head with the $1 billion company, और हम लोग भी कर रहे हैं. It's very tough. So पिछले 4 सालों में it's been a kind of a plateau. तो अब we've been bringing in, वो कहते हैं ना कि those who got you here may not be able to get you to the next level. So there has been a little bit of pruning, refreshing the C-suite, so we hired the CIO of the Department of Labor, and he's been instrumental in and then when I turned 60 3 years ago, so I decided that it's time to catch up. Like जिस तरह पहले भी catch up मैं किया था कि अब मैं ज़रा focus change करूँ. So I became the executive chairman, and Raza, who has been instrumental for the growth of the company, is now the CEO and doing much better than I. And I think मेरा एक जो hallmark रहा है हमेशा has been कि give people the opportunity. मेरा काम है to orchestrate,
to bring the right team together, to give them enough leeway to take the company to the next level, give them the resources. So that's my role right now. And these younger people are leading the charge, and I'm there to support and help them progress. Very good. And Very good. pursue my flying. So, by the way, I have to say, I have 2.5 planes, and I fly all over the country. And इसमें अच्छी बात ये है कि अब मैं fly करता हूँ on my terms. Whenever I want to fly, I can go and fly. And so API has nothing to do with it. Acha. yeah. So that very good. So now, so this is something you created an entity, you've grown it from scratch, and it is, I think, the sum of your work going forward. So that continues. You've kept on with your flying, and I know that you don't motorbike, but you bike. So आपके जो पुरानी जो मशगले थे वो सारे साथ चलते जा रहे हैं. बिल्कुल साथ चल रहे हैं. मोटरसाइकिल की थोड़ी स्टोरी ये है कि मेरे पास था मोटरसाइकिल एक 1200 सीसी. तो the day my son expressed the slightest interest in that, वो मैंने उसको बेच दिया. Because and so I think about my dad. My mother had passed away. It was just my dad and myself. And I don't know what kind of nerves he had to let me ride a 750 bike in Pakistan. I did not have those nerves. मैंने बेच दिया, मैं साइकिल पे आ गया. Good. अच्छा, अब हम जरा सी we'll come to some questions, but before that, you've gone to UET, you've been in Pakistan, you've come here, done a master's, you've created a company from scratch, then changed it, and now you built a decent sized company. Young लोगों के लिए messaging क्या है? Especially the kids that are, at the university, new graduates. The world has changed from the time that you were going to school. और ये कि both how to progress in corporate Pakistan या corporate America, as well as the entrepreneur part of it. So ये दोनों चीजों के बारे में जरा से बताइए. जी, तो I think जिस तरह शुरू में हमने बात की थी कि वो थेरेपिस्ट जो है वो आपके बचपन से बात शुरू करता है. तो so I think some of the experiences, especially जो यूनिवर्सिटी के दौरान मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज थी, जो भाग दौड़, आगे पीछे गपशप, तो I think I strongly believe कि you should not be single dimension कि अगर आपने कोर्स पढ़ रहे हैं तो you think your job is done when you've done well, आपके grades अच्छे हैं. Which may be okay अगर आपने सिर्फ PhD करनी है और tenures की तरफ जाना है या कोई और. But if you want to come to now entrepreneurship, or even if you want to progress, अच्छा, even in corporations, मैं तो I feel कि मेरा बड़ी कंपनी का experience नहीं है, and it held me back. It slowed down my growth because I think I jumped very quickly into this. I didn't have the networks. I didn't even know कि 5 या 10 बंदों की कंपनी से बड़ी कंपनी किस तरह चलती है, राइट? तो हमें जब हमारे प्रोजेक्ट्स हो रहे थे तो मुझे नहीं पता था कि उसका प्रोजेक्ट का रिव्यू कैसे करना है. All of these things we invented, ना नजर को पता था. So we had to hire people who taught us that. But going back to your question, I think even in corporations जो large है, मैंने काम नहीं किया हुआ, but in my own company I see कि that EQ जिसकी मैं बात करता रहता हूँ, that ability to relate to people, the ability to have be able to work through conflict, and to be able to assert your ideas and navigate that, because at the end of the day,
people buy from people, people sell to people. It's all people to people. That is, so agar, if you don't develop that muscle, and that muscle is developed through, I don't know, being part of associations and societies and having extracurricular habits and other mashgale and maybe politics, unions, whatever, These skills, I think, मैं तो emphasize करूँगा, especially engineers को, okay, because engineers, our educational background also gives a lot of problem-solving skills, the way we approach a problem, fact-based approach, So I think that is why so many engineers are so successful when they do MBA or something else. So young लोगों को तो मैं यही होगा कि ये, और दूसरा, I think there is no shortcut to anything doing worthwhile. Anything that's worthwhile takes an effort. There's no free lunch. You have to put your time in. But another thing has been integrity. I think without integrity in building the reputation and the expectation for our company, my CEO now and I, Raza, हमारा ये है कि यार शाम को जब हम घर जाते हैं ना, we should be able to sleep in our bed very comfortably. कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए. तो इसलिए हम टैक्स जो है वो $2 एक्स्ट्रा ही पे करते हैं यार, ये बाद में उनसे पूछे ना. So that's my approach. That's fair. I think these are very, very important lessons, life lessons हैं जो कि pass on करने हैं young लोगों को. आपने दो चीजें इस्तेमाल की. पहली बात तो इंटेग्रिटी वाली बात जो है वो बहुत अहम है हमारे बच्चों के लिए, यंग पीपल के लिए, कि भाई इंटेग्रिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज है. अगर आप लोग उसके बारे में पूरी तरह से नहीं समझते तो जाके डिक्शनरी में देख लीजिए. बट ये कि कॉल और फेल का तजाद नहीं होना चाहिए. जो आपके पास चीज है उसकी जो सच्चाई है उसके ऊपर रहना है. सो आई थिंक अगर ये वाली चीजें आदमी लेके चलेगा तो बाकी चीजों में आसानी होती है. हम देखते हैं दुनिया में कि कई लोग इधर उधर के काम गलत इधर उधर करते हैं, वो सक्सेसफुल भी हो सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे वो वाली चीज उस काबिल नहीं होती कि जिसके लिए वो किया जाए. सो आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन दैट यू गिव. सो आई थिंक दैट्स वंडरफुल फॉर पीपल. नाउ आपने कंसल्टिंग कंपनी बनाई है स्पेशली गवर्नमेंट के लिए, विच इज नॉट इजी, स्पेशली इन अमेरिका, एंड यू बीइंग नॉन नेटिव. तो उसके भी जरा बताइए कि हाउ डू यू gain trust and execute for the department that you work for? So initially जो हमें काम मिला था वो मिला था because the customer knew us as people, and like I said earlier, people buy from people at the end of the day. Even in engineering अगर आप देखें तो कोई, या एविएशन में देखें तो अगर कोई खुदा न खास्ता क्रैश हुआ है या कोई इंसिडेंट हुआ है तो कोई मशीन फेल कर गई है, तो जब उसका आप एनालिसिस करते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे देयर इज अ ह्यूमन डिसीजन बिहाइंड इट, और देयर इज ह्यूमन एलिमेंट दैट कॉज्ड इट इन द फाइनल एनालिसिस. या डिजाइन की प्रॉब्लम थी या उसके मैन्युफैक्चर की प्रॉब्लम थी या क्या, व्हाटएवर. सो सिमिलरली people buy from people, and the reason we had a breakthrough was not because we were offering something that was so unique and whatever, but because they knew that Imran or Dwayne Johanna will be able to deliver. So and जब हम वो काम कर रहे थे तो हमारा तो नहीं ख्याल था कि ये बाद में हम इनको बेच रहे होंगे. हम तो we were working for a company. So I think if you do your job well, if they see कि ये लोग जो हैं ये they are straight, so मेरी तो brute force approach थी कि यार we will वो कहते थे jump together is how high, so I mean we were able to initial contracts. Then how do you grow beyond that? So उसके लिए फिर हमने कुछ strategies वगैरह वो फिर you have to figure out, because at the end of the day you have to move out of that, so initial के लिए तो वो बहुत जरूरी है, लेकिन eventually you have to be offering some
some tangible value why they would hire you. So government may we figured, and it just took us a while because Raza भी electrical engineer है, मैं भी engineer, तो हमारा was थोड़ी सी वो थी अपनी कि यार हमने तो ये तो और किसी में काम है, हमने तो कोई इंजीनियरिंग की बात बताओ तो हम करेंगे. So we then finally figured out, and after that we started growing, was कि यार we need to really understand the mission of our customer. What is that agency's mission? We understand that mission, we understand their business issues. It's not about technology, it is about what they need. And if it's delivered through technology or what kind of technology. So वो थोड़ा सा हमें, it took us a while to kind of really understand. मैं तो MBA वाला नहीं किया हुआ, मैं तो I'm a plain technologist. So उसके लिए फिर I also sharpened my saw. Meaning I went and did the OPM program at Harvard. It was like a mini MBA. Then later on, जब हमारी company grew high enough कि we were selling directly to CIOs, I did, and Razan both, I did another master's degree at UVA, McIntyre Institute, MS in Management of IT. So, because then you learn how to talk the business language rather than the like पहले हम क्या उनको LAN WAN बेच रहे होते थे. So now you don't send LAN WAN, but you say the connectivity, or what it delivers. So anyway, that's an old example. So I think what changed us was when we realized that we took advantage of the barrier of entries into the government, because you need government experience to get the next job. Past performance is very important. So we figured out what is needed, what is जो भी field होती है उसकी, there are some peculiarities to that. Government की तो बहुत ज़्यादा हैं. We understand how to do an RFP response. That is why it's difficult for commercial companies to come into and start selling to the government, because there's a lot of barriers to entry. So we figured out all of those चीजें जो आपको चाहिए होती हैं, and you create why they will buy from NuAxis and not from XYZ. And in each case, there's a different jugaad. So, and that comes with experience. Yeah, बिल्कुल करके आता है, वो तो करने से आता है. तो बहुत वेरी गुड. हमने 3 चीजें अब आपकी जो मैसेजिंग सारी, अगर मैं उसका दरिया को कूजे में बंद करूं, तो एक तो यह कि एक्सपीरियंस सेट्स आर इम्पोर्टेंट. सेकंड इज द एबिलिटी टू टेक चांसेस एट द राइट टाइम टू पिवट थ्रू disappointments or negativity. And the तीसरी चीज ये है कि integrity and the way you are learn going through and expand your horizon, right, as you go. So I think this is a very, very nice way to frame your life, and I think we appreciate you taking the time, Imran. Thank you for your thoughts, insights, and a wonderful life story. Our next TechCAST number 12 will be on September 2nd, and we'll have our guest, Dr. Farhan Bakai from Apple, who's also an alum. Message for everybody: please subscribe to the ULEFUSA channels and help us with spreading the word. As always, I close with a share, और आज का शेर जो है वो अली मथर का है. उनका है कि मुजदाए खूबी ताबीर मिलेगा कि नहीं, मुजदाए खूबी ताबीर मिलेगा कि नहीं, देखिए ख्वाब में देखा हुआ कब देखते हैं. Thank you very much, Imran. Thank you very much, everybody. See you next time.